Hello everyone. In this video we will discuss about magnetic field due to a circular coil. Previous video में हमने देखा था कि किस तरीके से magnetic field produce होती थी when the current was passing through a straight wire or a straight conductor. Now in this we will study how the magnetic field is produced when the coil is in a circular form. So you can just look here कि we have a wire, we have a cardboard, we made two holes, okay, and through these holes we have passed one wire, okay, and then the downside we have connected it to a battery and to a switch, okay. Now what we will do, when we will just press the switch, what will happen? The current will flow through this wire, okay, the current will flow through this wire. And in electromagnetic induction, we have already learned that whenever a current is passed through a conductor or wire, it starts behaving as a magnet. Therefore, when the current will pass through this wire, it will also starts behaving as a magnet. As a result, the iron sprinkles or the iron filings which are sprinkled over the cardboard sheet will start arranging themselves under the influence of the magnetic field. And in this case, we will see that they have started aligning themselves in a circular track. Okay, in a circular track near the two holes. Because in straight conductor, the wire was passing through a single hole, therefore there were only one magnetic field created. Now here, since the wire is passing through two holes, so there are two places where the magnetic field will be produced. Now as you will see, when we are moving away from the hole, like we are moving away from the hole means this is the hole and we are moving away from it, we can just look here that the circular shape is somehow just vanishing and it is now becoming somehow like a parallel magnetic field lines. And as soon as we will enter or we will reach to the center portion, we will see we will have a straight line which seems to be perpendicular to the cardboard. Okay, so this is how the magnetic field will be produced in case of a circular coil. So here it is written, see, from the pattern itself you can understand that the magnetic field lines near the points are circular. Point के पास कैसी हैं? Circular. फिर near the center of the loop, जो हम loop के center पे जाते रहते हैं, there it appears to be parallel. And at the center, these lines are normal to the plane. Okay, now the next is the strength of the magnetic field can be increased. See, we know that whenever we are having a temporary magnet मतलब हम उनको करंट दे के जब उनको मैग्नेटाइज करते हैं और जब तक करंट है तभी तक वो वायर मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, दैट मीन्स इट इज़ अ टेम्परेरी मैग्नेट. तो उसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को भी हम इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं. How we can increase this? Either we can increase the strength of the current which we are passing, जो हम current दे रहे हैं उसकी strength को बढ़ा दें, उसके magnitude को बढ़ा दें. The next is by increasing the number of turns in the loop. जो तार है या जो wire है उसके loops या उसके folds को हम increase कर दें. So these are the two ways by which we can increase the magnetic field. Now the next is clock rule. See, according to clock rule, it is said that by understanding whether the current is flowing in clockwise direction or anti-clockwise direction, we can just get whether the end is behaving as south pole or north pole. So according to this clock rule, if the wire is just, or if in the wire the current is flowing in anti-clockwise direction, for example, if the current is in anti-clockwise direction, so anti-clockwise means through this way. Okay, this is anti-clockwise. So when the end through which the current will pass via anti-clockwise direction, that end will act as a north pole. And if the current is in clockwise direction like this, in this direction, clockwise direction, then this end will behave as a south pole. So this is the clock rule. Now the next is magnetic field due to solenoid. See, what do you understand by solenoid? Basically, solenoid is nothing but when a wire is wounded over insulation or over insulated material, then that formation or that arrangement of wire is known to form a solenoid. Okay,
So this in this now we will learn how the magnetic field is created in the solenoid. Now see, here is the example, here is the figure showing the solenoid. Okay, now in solenoid you can see this is a rectangular bar and over this number of ऐसे turns बने हुए हैं. ठीक है. So in case of solenoid, the magnetic field which is produced is just similar to the magnetic field lines which were produced when we were studying about a bar magnet. In class 9th, we have learned that when we have a bar magnet and this is a north pole and this is south pole, then how the magnetic field lines emerge? The magnetic field lines emerge out from north pole and ends to south pole. So this is how we have learned. So in case of solenoid also, the same pattern of magnetic field lines will be there. Okay, so the pattern of magnetic field lines in the solenoid is just same as the pattern which were formed in case of rectangular bar or the bar magnet. But here we need to know which pole or which end is acting as a north and south direction. So that can be that can be determined by the clock rule. So from the pattern of the magnetic field line it is found कि ये जो magnetic field lines हैं inside the solenoid के अंदर कैसी हैं? Parallel है. But outside the solenoid they are not parallel. Okay. Now the next is the strength of a magnetic field lines can be increased or it can be made denser by magnetic field lines को हम करंट के मैग्नीट्यूड को बढ़ा के इंक्रीज कर सकते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर को इंक्रीज करके कर सकते हैं एंड बाय इंसर्टिंग अ सॉफ्ट आयरन कोर. सी व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉफ्ट आयरन कोर? सॉफ्ट आयरन कोर क्या होता है कि जब हम किसी भी वायर को सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर वाइंड अप करते हैं और फिर जब उस वायर के थ्रू हम करंट प्रोड्यूस कराते हैं या करंट को पास कराते हैं तो करंट स्टार्ट्स बिहेविंग एज अ मैग्नेट एंड बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्शन द सॉफ्ट आयरन बार ऑल्सो बिहेव्स एज अ मैग्नेट. So it is acting as a temporary magnet and it is very easy to increase or to decrease the magnetic strength as per our need, especially in case of temporary magnet. But it is not true for permanent magnet. Especially for permanent, we cannot change the magnetic field, we cannot change the strength, we cannot change the polarity as per our need. So this is basically the difference between temporary and permanent magnet. So since the solenoid is a temporary magnet, so we can just increase or decrease the strength of the magnetic field. So here also the polarity can also be changed. Okay, the end, it is clearly by the rule, clock rule, the end at which the current is in anti-clockwise, that will act as a north pole, while if the current is clockwise, it will act as a south pole. Okay. Now, the similarity and dissimilarity between the current carrying solenoid and a bar magnet. So, abhi I told you that the pattern in which the magnetic field lines are produced in solenoid is very same as that of a bar magnet. So, what is the difference then? See, magnetic field lines of both of them are very similar. Okay. The solenoid one is just similar as a bar magnet. Okay. But the dissimilarity is in case of a solenoid, since it is a temporary magnet, so we can increase or decrease its strength, we can change its strength. Okay, but in case of a bar magnet, it is not a temporary magnet. Bar magnet is a permanent magnet, so we cannot change its strength, we cannot change its magnetic strength, we cannot increase or decrease the magnetic strength. Polarity cannot be changed. If in a bar magnet already we have a north south direction, so we cannot change the polarity. हम north को south नहीं बना सकते, but solenoid और temporary magnet के केस में हम polarity को भी change कर सकते हैं. Now the next is electromagnet. See, electromagnet is one of the best example of a temporary magnet. Electromagnet क्या होता है? We have already learnt of solenoid. Solenoid में हम क्या करते थे? Wires को सिलेंड्रिकल शेप में राउंड करते थे, और जब इसी वायर को हम एक सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर वाइंड करते हैं तो इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट. सो इन इलेक्ट्रोमैग्नेट स्पेशली द कोर ऑफ द सोलेनॉइड इज अ सॉफ्ट आयरन बार. ओके, सो since it is electromagnet, it is temporary magnet, so we can vary the magnetic strength or we can change the magnetic strength. So electromagnet is basically of two types. One is I-shaped and the other one is
U-shaped. Okay, so I-shaped is just similar like a bar-shaped magnet. Here we can understand the polarity. See, since the from this and this end we can categorize whether the current is flowing in clockwise or in anti-clockwise. Here the current is flowing like this, so it is clockwise, and here the current is flowing out of it like this, ऐसे जाएगा, so it is anti-clockwise. So this is north pole, this is south pole. Similarly, in U-shaped magnet also we can guess whether the current will flow in clockwise or in anti-clockwise, and we can guess the polarity. So these were the two types of electromagnet. Now the basic use of electromagnet we will learn. Now see, here now we have started with permanent magnet. सी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक फील्ड को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स और करंट को बढ़ा के. ठीक है, अब हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन क्या है कि फॉर सेंडिंग द करंट इन अ कॉइल द सोर्स मस्ट बी अ डीसी सोर्स. अगर हम किसी कॉइल के थ्रू किसी करंट को भेज रहे हैं, एज वी हैव लर्न कि हम करंट को जब सप्लाई करते हैं तो वो मैग्नेट की तरह एक्ट करने लगता है, तो हमको डीसी करंट भेजना है, क्योंकि एसी करंट क्या होता है, एसी करंट अपने आप ही अपने डायरेक्शंस को पीरियोडिकली चेंज करता रहता है. तो अगर हम एसी करंट को सप्लाई करेंगे तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ या जो पोलैरिटी है वो पीरियोडिकली टाइम टू टाइम खुद ही चेंज होती रहेगी. सो इन ऑर्डर टू अवॉइड द चेंज वी हैव टू यूज द डीसी करंट. नाउ व्हाट अबाउट द परमानेंट मैग्नेट. सी परमानेंट मैग्नेट जिसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को आप ना घटा सके ना बढ़ा सके, पोलैरिटी को चेंज नहीं कर सके, एंड परमानेंट मैग्नेट आर बेसिकली द नेचुरली अकरिंग मैग्नेट. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट ओवर अ परमानेंट मैग्नेट. व्हाट इज एडवांटेज. सी एडवांटेज ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, इसकी जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होती है आप उसको एज पर योर नीड इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं. क्योंकि आप अपनी नीड से इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं, तो आपको अगर बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड भी चाहिए तो भी आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट से मिल सकती है. बट परमानेंट मैग्नेट के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है. परमानेंट मैग्नेट के साथ इसकी एक लिमिटेड मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होती है विच कैन नॉट बी चेंज्ड. The strength of a magnetic field of an electromagnet can be changed. We have already discussed it. Okay. Now, the polarity also. इलेक्ट्रोमैग्नेट की पोलैरिटी को आप चेंज कर सकते हैं, बट परमानेंट की पोलैरिटी आप चेंज नहीं कर सकते. देन यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट. इलेक्ट्रोमैग्नेट का बहुत ज़्यादा यूज़ है. आप गार्बेज में से जो आयरन के पीसेस या गार्बेज में से आप प्लास्टिक वेस्ट और मैग्नेटिक वेस्ट को अलग करना चाहते हैं, तो आप जो क्रेन होता है, यू जस्ट मेक द अरेंजमेंट सच दैट कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्रेन में लगा हो, और वही क्रेन को आप कूड़े के ऊपर अगर फैलाते हैं या एक बार पास अवे करते हैं तो वो क्रेन इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या करता है, मैग्नेटिक जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको अट्रैक्ट कर लेता है और बाकी को नीचे लेफ्ट आउट कर देता है. Okay, so these are some of the electromagnet, but the most important application of electromagnet that is in our syllabus is use of electromagnet in electric bell. Okay, so electric bell works on the principle of an electromagnet. Electromagnet means the time till the time we are supplying the current to the wire, it will behave as a magnet. Now, if I discuss about the electric bell and its working, we need to understand how it works. Okay, now see, as the switch is off, जैसे ही हमने स्विच को ऑफ किया क्या होगा, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा थ्रू द कॉइल. ओके, ये कॉइल के थ्रू ये जो करंट है ये पास होना स्ट्रांग हो जाएगा. ठीक है, अब ये है एडजस्टिंग स्क्रू और इसी से अटैच्ड है हैमर. ओके, इसी से अटैच्ड है हैमर, and this is armature. So when the current will pass through the coil which is wounded around an electromagnet, so the electromagnet will get magnetized. electromagnet क्या हो जाएगा, magnetize हो जाएगा, और जैसे ही magnetize हो जाएगा वो क्या, this is electromagnet, इसके थ्रू भी वायर गया तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटाइज हो जाएगा. तो ये जो आर्मेचर है, जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटाइज हो जाएगा ये आर्मेचर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा. जैसे ही आर्मेचर इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, आर्मेचर से ही कनेक्टेड है हैमर, हैमर तुरंत इस गोंग से स्ट्राइक कर जाएगा और बेल बज जाएगी. ओके, जैसे ही आर्मेचर अपना कनेक्शन स्क्रू से हटा देगा और इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा और बेल हो गई. नाउ सिंस इट हैज़ लेफ्ट इट्स कनेक्शन विद द स्क्रू, तो वायर तो स्क्रूज के थ्रू पास हो रही थी, पर जैसे ही आर्मेचर ने स्क्रू से अपना कनेक्शन हटा दिया, अगेन द करंट विल स्टॉप एंड इट विल नॉट फ्लो फर्दर इनटू द इलेक्ट्रोमैग्नेट. बिकॉज यू कैन लुक हियर,
the current is passing through the screw, okay, and via screw it is passing to electromagnet, okay. But now as the armature will leave its contact with the screw, क्योंकि जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाएगा तो ये अपना कॉन्टेक्ट इस स्क्रू से हटा देगा. तो स्क्रू से इफ इट विल लीव इट्स कॉन्टेक्ट, हाउ द करंट विल फ्लो इनटू दिस इलेक्ट्रोमैग्नेट. सो द करंट विल स्टॉप एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट विल स्टॉप बिहेविंग एज अ मैग्नेट. और जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेट अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खो देगा, वापस से ये आर्मेचर विल कम बैक टू इट्स पोजीशन एंड विल गेट connected with the, it will come back to its position and will get connected with the screw. Again the current will pass via screw to the electromagnet. Again the condition of magnetic property will be there in the electromagnet. It will again attract this armature, and again as it will attract the armature, its connection with the circuit will cut off. And similarly in this way it keep on continuing, and as a result the bell rings as long as the switch is kept pressed. जब तक आर्मेचर स्क्रू से लगा रहेगा तभी तक सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेट अपनी प्रॉपर्टी मैग्नेटिज्म की शो करेगा. वंस इट विल अट्रैक्ट द आर्मेचर एंड आर्मेचर का कनेक्शन वो स्क्रू से हटा देगा, करंट फ्लो होना फिर से बंद हो जाएगा. So this is what about the application of an electromagnet in electric bell. Hope this will help you a bit in understanding the topic. Try to relate the topic and try to recall the explanation with the help of the given notes. Thank you.